आता है, पहले विल अटेंड द इको साउंडर. So we start eco sounder today. अभी तक जो जो पढ़ाई हो चुकी है उसमें any questions, any doubts, anything that you want to ask? सर INS और IBS भी बचा. वो part of ECDC है, समझ लो. That is only 15-20 minutes of discussion will be there. INS basically is an extension of ECDS, Integrated Navigation System. बात करेंगे उसके बारे में 10-15 minutes में बात होएगी. That's just basically an introduction. उसे question नहीं आता अलग से. So that should be okay. That should be okay. That is in control. IBS INS. Any question that you want to ask so far? Whatever we have done. We have done Banvas, PDR, AIS, LRIT, EM log, Doppler log, and so many things. Anything that you want to ask? Any clarifications? No questions. Good morning, Alright. sir. ये क्वेश्चन है. गुड मॉर्निंग. कौन बोला गुड मॉर्निंग? Gautam. Good morning. Gautam. Very good morning, Gautam. Very good morning. I was saying, if you have any doubt, any question to ask from the previous chapters, whatever we have done, topics that we have covered already. कोई question? Okay, I can understand what you're saying or what not saying. पढ़ेंगे तब डाउट होगी तब पूछेंगे. You still have time. You can go through the chapters. If you come across any doubt, you can ask me. Even after the classes are over, even after the batches are over, you still can get back to me for any query anytime. I'm available to you all. आप बैच या पिछला बैच या उसके पिछला बैच या anybody free to ask any kind of help. I'm there. Don't worry. So we are starting eco sounder. Thank you so much, sir. Most welcome. Always, anytime you send me a message, नंबर होगा आप लोगों के पास, व्हाट्सएप कीजिए, फोन कीजिए. 24 hours a day I am available. No problem. आप रात में भी करोगे तो मैं उठाऊंगा. नहीं होगी बात तो मैं बता दूंगा कि मैं तब करूंगा. अभी थोड़ा कुछ चल रहा है, कुछ बिजी है, but I'll get back. Next, eco sounder. As you know, eco sounder is used for finding out the depth. Thank you, Sahib. It is used to find out the depth of the water, seabed. In general, it gives you UKC. UKC, that means under clearance. But this, if you add your draft with the UKC, you get the depth of the water. The principle of operation of eco sounder is exactly same as the radar. जो रेडार काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे इको साउंडर भी काम करता है. बहुत सारी प्रॉपर्टीज रेडार की और इको साउंडर की सेम है. सो मच सो कि नाम भी सिमिलर है. वो रेडार है, इसको सोनार बोलते हैं. अदर नेम फॉर eco sounder, what we are calling, is also called sonar. SONAR. Radar is what full form? Radar का नाम बताइए जी. Full form क्या है? Sir, radio detecting and ranging. Radio detection and ranging. Sonar is sound navigation and ranging. Even the names are similar. तो आप लोगों ने ROC का कोर्स किया हुआ है, सभी लोगों ने 10 दिन का कोर्स किया है. नहीं किया सर.
नहीं किया है? सर डायरेक्ट सी टाइम खत्म होने के बाद क्लासेस ज्वाइन कर ली। अच्छा ओके, तो अभी करेंगे, ठीक है, चलो नहीं किया है। सो वी विल स्टॉप द रेफरेंस ऑफ रेडार। अब रेडार के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव नॉट डन रेडार, सो रेडार की बात नहीं करेंगे। बट पे अटेंशन, जो हम सोनार की बात करेंगे वो आपको काम आएगा जब आप रेडार पढ़ रहे हो। आई वाज टेकिंग हेल्प ऑफ रेडार क्लास इन इको साउंडर, नाउ दैट यू आर हैविंग इको साउंडर, इसका हेल्प आपको मिलेगा वहां पे। सो पे अटेंशन जब आरओसी का कोर्स करने जाएंगे तो। You know that waves can be transmitted. When I say the waves are traveling like this, sound waves, or sound waves get reflected back from a surface. When it hits a surface, वापस आती है। एक बड़े बिल्डिंग के सामने जाकर के खड़े होकर के चिल्लाइए तो आवाज आती है, वापस आती है ना। आपने कहा, मान लो किसी का नाम लिया या पटाखा छोड़ा तो वापस आती है आवाज, आती है या नहीं? यस सर। अगर दो बिल्डिंग के बीच में खड़े होंगे तो साउंड जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, लाइक तोहफा 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 तोहफा, लाया लाया लाया, रिपीट होता है। दैट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द साउंड वेव्स और एनी काइंड ऑफ वेव्स, when it hits a surface, it is reflected back, and we use this reflection of the waves from a surface for finding out the depth of the seabed. That is the basic principle, reflection of waves. So what the ship is doing, it is transmitting waves from the keel. Again, जैसे Doppler log में transducer था, which was transmitting signal at an angle towards the seabed. Echo sounder में, since depth is required, the signals are transmitted vertically downwards. Ship से एकदम vertically downwards transmit होता है, keel से. The signal will travel from the transducer, from the keel of the ship. It will go down, hit the seabed, and come back as an echo. Transmit किया, echo वापस आई, reflected energy comes back. So what is the total distance traveled by a wave? अगर हमने बोला, मान लीजिए एक पिंग, ये साउंड निकाला, पिंग, टकराती है, वापस आती है। पिंग को जब जाके टकरा के वापस आया, what is the total distance traveled by? The depth going, Twice of UTK. exactly. The depth going and depth coming, twice the depth. Total distance traveled is twice the depth. That means depth is how much? Half of the depth is how much? Total depth is twice, total distance traveled is twice the depth. जितना डीप है उसका जाना आना, ये टोटल डिस्टेंस है। तो डेप्थ कितना है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 होगा या नहीं? यस सर, डिवाइडेड बाय 2. So total distance divided by 2 is the depth. That's the basic principle. Now our challenge is to find out what is the total depth. Divided by 2 कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन total depth है कितना? If you know your speed, and you travel for a given distance, a given time, the total distance can be calculated or not?
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट है या नहीं? कृष्णा कुमार उपाध्याय, Yes, sir. क्या? यस सर क्या? यस सर क्या? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? Go ahead, waiting for you. So speed into time. If you are running at the speed of 10 kilometers per hour, एक घंटे में 10 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, आपने इतने बजे शुरू किया और गए और वापस आए, जब वापस आए मैंने देखा 1 घंटा, 1 घंटे आप गए और आए, मैक्सिमम कितना दूर गए आप? यहां से कितनी दूर जाके वापस आए? 5 दिव्या जोर से बोलो, नहीं सुनाई पड़ा। 5 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे तक चले, टोटल डिस्टेंस मस्ट बी 10 किलोमीटर। उस 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, दैट मीन्स मैं कहां तक गया? आई वेंट 5 किलोमीटर्स। सो ऑन द बोर्ड, talking about the same principle, let me set up the camera. One second. Is the board visible properly? पूरा बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Okay. So the principle of echo sounder is simply reflection of wave. Or acoustic wave we can say. Acoustic waves are similar to sound waves. Only we cannot necessarily hear this. What we can hear is the sound, what we cannot hear is ultrasonic sounds. What is done? The ship is fitted with again a transducer. One for transmission, other for reception. The signal is traveling at a constant speed under the water. If this is salt water having salinity of 3.4% and temperature of 16 degrees centigrade, what is the value of C? कितने स्पीड से चलती है सॉल्ट वाटर में? रिमेंबर डॉपलर लॉग। फटाफट जवाब दो, टाइम मत लो। अजीब हाल है, कोई जवाब नहीं दे रहा। 1500 meter per second. 1500 meter per second. So the value of C is 1500 meter per second. The pulses are transmitted. Pulses means ping, 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 like that. Or ping, 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 ping. Or ping, ping, ping. So the pulses, that means they are transmitted in a burst of energy. ट्रांसमिट करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग पल्स. जैसे ये पल्स चलता है, टक 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 टक, वैसे पल्स में चलता है. द पल्स is traveling all the way to the seabed and coming back here, received by the receiver.
the depth is the way down and the way up. So total distance traveled by the pulse, which is c into t. कितने स्पीड से चलता है और कितने टाइम के लिए चला, जब गया और आया तो कितने टाइम बाद वापस आया, that is the total distance. Then the depth is equal to c into t divided by 2. So this is the basic, most basic, simplest form of device, where the depth is calculated on the basis of total distance traveled divided by 2. The total distance traveled is c into t. कितने स्पीड से चलता है और कितने बाद में वापस आया. अगर ये डेप्थ कम होती तो जल्दी आएगा, अगर डेप्थ ज्यादा होगी तो और थोड़ा टाइम लगेगा, और डेप्थ होगी तो और ज्यादा टाइम लगेगा. तो जितना टाइम लगता है multiplied that by the c gives you the depth of the water. Are we good on this? Are we good on this? Yes, sir. Okay. Now the ship is already having some draft. So if you want the depth of the water, then UKC, which we have just calculated, c into t divided by 2, इसके साथ, इस डेप्थ के साथ ये ऐड करना होगा या नहीं? बात करते रहो भाई, दीवार से बात करने का शौक नहीं मुझको. Yes, sir. That means depth of the water actually is c into t divided by 2 plus dr draft. प्लस हो सकता है कि कोई सिस्टम कांस्टेंट्स वगैरह हो, ट्रांसड्यूसर थोड़ा भीतर करके लगाया है तो यूकेसी तो इतनी होगी, प्लस ये भी ऐड करना पड़ेगा. So there can be some system constants because of installation. So all told, depth of the water is equal to c into t divided by 2 plus the draft, static draft, plus system constants k. Are we good on this? Basic principle. सर अगर आपने बताया जैसे अंदर करके लगाया होगा तो कांस्टेंट माइनस नहीं होगा, दो बार ही आ जाएगा ना वो तो. हाँ तो प्लस माइनस इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना. हाँ सर. प्लस में माइनस के हो सकता है या प्लस के हो सकता है, तो प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा. हाँ या सर. तो बाहर भीतर करके लगाया होगा, या हो सकता है थोड़ा ऐसे करके लगाया हो, कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि यहाँ 10 सेंटीमीटर भीतर करके लगाया हो, 10 सेंटीमीटर ओनली, तो 10 सेंटीमीटर ऐड करना होगा या कम करना होगा. जो यहाँ से ट्रांसमिशन होगी तो डेप्थ ज्यादा बताएगा ना, दैट मीन्स इसको माइनस हाँ करना सर. होगा. यूकेसी के लिए इसको माइनस करना होगा, तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस के हो जाएगा. अगर बाहर करके लगाया तो प्लस के हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. So this is the basic principle of the echo sounder. Now few things that we should understand, that there is a transmitting transducer and there is a receiving transducer. What is the function of a transducer? It converts electrical energy into sound waves. What is the function of receiving transducer? It receives the signal, sound waves,
and converts back into electrical signal. That means transmission के लिए हमें एक electrical current generate करना होगा, which comes from something called oscillator. Oscillator is an electronic circuit which can provide different kind of electrical currents of different frequencies. अलग अलग frequency पे electrical current provide कर सकते हैं. When these signals are given to the transducer, same kind of frequencies will be converted into sound waves. जैसे कोई साउंड होती है बूम 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 बूम, दूसरी साउंड होती है बूम 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 बूम, या और पतली आवाज करे तो बूम 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 बूम. These are different frequencies. The oscillator is sending signal to the transducer. Transducer vibrates and it is the transducer is producing signal. तो यहाँ पे है सारा खोपड़ी में सारा प्रोसेसर है. This decides what it is going to do. The signal is given from here to the transducer vocal cord. The vocal cord vibrates and the sound waves are converted and it is propagating. Since it is in air, what is the speed at which the sound wave are traveling in air? What is the speed? Sir, 3 into 10 to 330. the power 8 meter per. Very good. 330 meters, 340 meters per second. That is air because the medium is light, so speed is less. अगर medium denser होएगा तो speed is faster. Salt water में हमने देखा 1500, air में only 330. Now, as we said that pulses are transmitted, तो इसका कुछ properties होएगा. Pulse ऐसा होएगा या ऐसा होएगा या ऐसा होएगा. ये तो सारे पल्सेस है ना भाई. ये है पिंग पिंग पिंग, ये है पिंग 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 पिंग, ये है पिंग पिंग पिंग. All are pulses. What is the difference between all the three? एक तो ये कि कितनी देर का साउंड प्रोड्यूस किया, that is different. पिंग पिंग पिंग. So there is one property, the length of the pulse itself. The other property that we have is how fast they are repeated. यहां से यहां के बीच में how many pulses repeated. If this is 1 second of time, in 1 second पहले केस में how many pulses transmitted? 4 sir. Very good. So 4 here. How many transmitted in the next one? 6. 6. The third case it is 3. 3. तो दो चीजें यहां दिख रही हैं. एक तो पल्स का लेंथ कितना है और दूसरा ये रिपीटिशन कितनी बार होता है. पल्स का लेंथ कितना है और रिपीटिशन कितनी बार होती है. So in this one is termed as pulse length and this one is termed as PRF. पल्स कितनी देर के लिए जनरेट किया? पिंग पिंग पिंग. पल्स का लेंथ is pulse length. Number of pulses in 1 second is pulse repetition frequency. Pulse कैसे repeat हो रहा है? How many pulses are getting repeated in unit time? 1 second is PRF.
Remember that this can be different frequencies itself. This is the sound of the frequency, I mean frequency of the given sound. Like this can be ping, ping, ping. अलग अलग sound हो सकती है. But how many times they are repeated is PR. Okay. एक वॉलंटियर, इसको रिपीट करो 1 सेकंड में, रिपीट करो, मेक ए साउंड, जैसे मैं कर रहा था, मेरी नकल करो. ओके, लेट मी गिव यू अ नेम. प्रभजोत, रिपीट दिस. प्रभजोत, मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा. नहीं है. अपूर्व, अपूर्व, ये भी नहीं है. कौन है क्लास में? दिव्या. Yes, sir. Just give me some sound to indicate this. Ping, ping, ping. ओके, तो आपने बोला और मैंने बोला पिंग पिंग पिंग. दोनों की आवाज में फर्क है कि नहीं? Yes, sir. Frequency. वो फ्रीक्वेंसी इसका है, फ्रीक्वेंसी की कितने फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट हो रहा है. बट आपने भी पिंग 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 3 बार बोला, मैंने भी बोला, दैट इज पीआरएफ. हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड? आपने भी 3 बार रिपीट किया, आपका भी पीआरएफ 3 था, मेरा भी पीआरएफ 3 था, बट साउंड जो इसमें आई वो अलग अलग थी. तो ये फ्रीक्वेंसी अलग है, साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग है, और कितनी बार रिपीट होता है दैट इज डिफरेंट. आर वी क्लियर? Yes, sir. ओके. सो इनका क्या रोल है? What is the role of PL and PRF? How it affects the working of echo sounder? PL decides the minimum depth measurable by echo sounder. PL डिसाइड करता है कि मिनिमम डेप्थ कितनी रीडिंग होगी. अभी हमने देखा था कि एक PL was this, another PL was this, another PL was this. सबका पल्स लेंथ अलग अलग है. This PL will decide what is the minimum depth that can be measured by the echo sounder. How? This is the pulse which is going to get transmitted. अभी शुरू होएगा यहां से, अभी सिस्टम में है, अभी बाहर नहीं निकला, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, जस्ट निकल रहा है. राइट एट दिस मोमेंट इट इज कमिंग आउट. जब ये चल पड़ा थोड़ा सा आगे, तो ऐसा सिचुएशन होगा या नहीं? और थोड़ा आगे गया तो अभी ट्रांसमिशन हो ही रही है. पहला पॉइंट जो है वो आगे गया है, लेकिन अभी ट्रांसमिशन चल ही रही है ना. और आगे जाएगा तो खत्म होएगा. दैट मीन्स जब टेल एंड यहाँ पे खत्म हो रहा है तो जो लीडिंग एज है वो यहां तक पहुंच चुका है. यहाँ पे अगर सी बेड है, टकरा के वापस आएगी तो ऐसा सिचुएशन होगा. टकरा के वापस और जाएगी तो ये सिचुएशन होगा. जब यहाँ पे रिसीव होगी तो ये सिचुएशन होगा. सही है या नहीं? यस सर. या नहीं? यस Now, सर. ट्रांसमिशन हुई थी और रिसेप्शन हुई थी, इन दोनों के बीच का टाइम ही हम लेते हैं C into T करने के लिए.
दैट मीन्स जब रिसीव होगा और ट्रांसमिट जो हुआ था उन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस हम लेंगे, तभी डेप्थ मिलता है हमें। तो अभी के केस में आप ये डेप्थ कितना देख रहे हो? इज इट इक्वल टू द पीएल? इज इट इक्वल टू द पीएल? यस सर। मैंने बोला डॉट, तो जब मैं डॉट बोल रहा हूं तो डी वहां गई तब टी खत्म हो रहा है, डॉट डॉट डी यहां पे पहुंच चुकी है तब टी खत्म हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. अगर मैं बोलूं डॉट तो डी वहां पहुंच चुकी है तब टी खत्म हो रहा है ना? यस सर। Yes, sir. मतलब पल्स लेंथ एक डिस्टेंस के बराबर भी है, जितनी स्पीड से चलता है वेव उतना दूर डी गया। जब मैं टी खत्म कर रहा था, अगर पल्स लेंथ बड़ा होगा तो डी ज्यादा दूर गया है, अगर पल्स लेंथ छोटी है डॉट तो डी यहां पे पहुंचा होगा, टी खत्म हो गई। अगर मैंने कहा डॉट डी वहां पहुंच गई तब यहां पे खत्म हो रहा होगा। दैट मीन्स पल्स लेंथ कैन बी मेजर्ड इन आइदर टाइम और डिस्टेंस और लेंथ। कैसे? तो डॉट बोला, डॉट इतना छोटा सा टाइम, डॉट इतना ज्यादा टाइम, जितनी देर के लिए साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं दैट इज द पल्स लेंथ इन टाइम। आर वी गुड? समझ में आ रही बात? आ गया सर। यस दिव्या, क्या कहा? आ गया सर। आ गया। सो this has got a distance, this got a distance, this has got a distance। तो ये जब डॉट चल रहा था तो डॉट यहाँ टी खत्म हुआ, जब डी यहाँ पे था, जब वापस गई डी यहाँ पे पहुंचा तो टी यहाँ से चल रहा था रिफ्लेक्ट होके। So this is the depth which is equal to the length of the pulse. Now suppose if the depth was only this much, तो पल्स चलना शुरू होगा। जब ये यहाँ पे पहुंची तो ऐसा सिचुएशन, जब ये टकरा गई तो अभी ट्रांसमिशन चल ही रही है या नहीं? जब यहां से रिफ्लेक्शन शुरू हो गया क्योंकि डेप्थ इतना ही है, तो अभी ट्रांसमिशन चल रहा है या नहीं? यार जवाब नहीं देते तो अच्छा नहीं लगता। ऑल राइट, PL decides D minimum, so D minimum is equal to C into PL in seconds divided by 2. PL decides minimum depth, which is given by C into PL in seconds divided by 2. PRF decides maximum depth measurable by echo sounder. C max is equal to C into time between two pulses divided by 2. नोट कर लो। नोट इट डाउन।
टेल मी व्हेन यू आर डन। वो भी नहीं, मत बोलना, डोंट टेल मी, आई विल डिसाइड व्हेन यू आर डन। बोल लेंगे सर, हाँ जी, बोल देंगे सर। हाँ नहीं तो आप लोग बात तो करते नहीं, तो मैं खुद डिसाइड करूंगा ना, पूछूंगा तो फिर दिमाग खराब होएगा ना मेरा। पूछूंगा जवाब नहीं दोगे तो मैं गुस्सा आएगा मुझको, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपसे पूछता नहीं हूँ। आई विल डिसाइड व्हेन टू वाइप ऑफ, लिखा चाहे नहीं लिखा, जो मेरी डिसीजन होगी वही रहेगी। जब आप लोग जवाब ही नहीं देते हो, मैं इतना कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या करूँ? ऑल राइट, PL values normally 0.222 milliseconds, इतने का पल्स होता है इको साउंडर में। 0.222 मिलीसेकंड्स का पल्स लेंथ होता है। PRF वैल्यूज ranges from 12 to 36, 12 for deep water, 36 for shallow water। जब डेप्थ कम रीड करना हो तो PRF ज्यादा होती है, पिंग 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 पिंग। जब डेप्थ ज्यादा रीड करनी हो तो धीरे हो जाता है PRF, पिंग 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 या पिंग पिंग पिंग। On the other hand, longer pulse length for deep water, shorter pulse for shallow water। shallow waters के लिए छोटा पल्स, जल्दी जल्दी, पिंग 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 पिंग। डीप वाटर के लिए बड़ा पल्स, धीरे धीरे, पिंग 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 पिंग। धीरे क्यों? क्योंकि द पल्स हैज टू गो ऑल द वे डाउन एंड देन कम बैक, इसलिए धीरे हो जाता है। क्योंकि एक पल्स को टाइम चाहिए ज्यादा भीतर जाने के लिए और वापस आने के लिए। तो दिस मच ऑफ टाइम इज गिवन बिटवीन टू पल्सेस। इसी के लिए हमने कहा कि एक पल्स हो गई, जाके वापस आएगी, अब दूसरा पल्स शुरू होगा। सो वी रिक्वायर मोर टाइम बिटवीन टू पल्सेस, एंड दैट इज पॉसिबल जब रेट कम हो। धीरे धीरे करेंगे तब तो ज्यादा टाइम देंगे तो पल्स के बीच में। अगर डेप्थ कम होगी तो ये जाएगा और तुरंत आएगा, जाएगा तुरंत आएगा। तो एक पल्स के बाद दूसरा पल्स, जल्दी जल्दी, पिंग 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 पिंग। So these two are basic characteristics of echo sounder, pulse length, PRF. These two decide the performance of the echo sounder. Next one is frequency. Frequency also decides the performance of the echo sounder. We can have high frequency or we can have low frequency. Low frequency for deep water reading, high frequency for shallow water reading. High frequency for shallow waters, low frequency for deep waters. Why? Because there is less attenuation. Less attenuation of the low frequency. ये जल्दी मरता नहीं. It can travel long distance. High frequency there will be more attenuation. So अगर high frequency डालेंगे तो नीचे जाके वापस आते आते खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं कुछ, इको सुनाई नहीं पड़ेगी.
So high frequency is used for shallow water. इसमें पॉजिटिव क्या है इसके साथ? It is more accurate. High frequency reading gives better accuracy. डीप वाटर में ये तो अच्छी चीज है, लेस एटेन्यूएशन, दूर तक चलता है, ये तो अच्छी चीज है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी इज नॉट गुड. तो कोई बात नहीं, डीप वाटर है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा अगर होएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे शैलो वाटर्स में ज्यादा एक्यूरेट चाहिए, थोड़ा बॉटम टच कर जाएगा अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो. सो फ्रीक्वेंसी decides also the performance of the echo sounder. There can be high frequency or low frequency. High frequency is used for shallow waters, which gives better accuracy. Low frequency can be used for deep waters reading, which has poor accuracy. तो अब इन दोनों के बीच में हम फंस गए, ना हाई ज्यादा कर सकते हैं ना लो कर सकते हैं. So what frequency to use? दोनों के बीच में, which is not too high, not too low, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज. पहला कंडीशन ये है that it should be out of audible range. जो ह्यूमन साउंड हम लोग सुनते हैं, जो साउंड सुनते हैं, उससे बाहर होना चाहिए, नहीं तो वो इधर उधर के नॉइज को पिकअप करने लगेगा. सो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का रेंज होता है ऑडिएबल रेंज. सो 20 किलो हर्ट्ज से तो बाहर होना चाहिए. सो नॉर्मली इट इज चूजन बिटवीन 30 to 55 किलो हर्ट्ज. इन दोनों के बीच में कुछ फ्रीक्वेंसी होगी इको साउंडर की, बिटवीन 30 and 55 किलो हर्ट्ज के बीच में जनरली देयर इज फ्रीक्वेंसी चूजन. ये दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज है कि लो का डीप भी मिल जाएगा, हाई का थोड़ा एक्यूरेसी भी मिल जाएगा. दैट इज व्हेन देयर इज सिंगल फ्रीक्वेंसी. अगर इको साउंडर में सिंगल फ्रीक्वेंसी है, then it should be within this. But good echo sounders may have dual frequency. दोनों का बेनिफिट उठाना है मुझको ज्यादा एक्यूरेसी भी चाहिए, डीप वाटर रीडिंग भी चाहिए. तो इको साउंडर जो अच्छे क्वालिटी का होगा, ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, उसमें दो फ्रीक्वेंसी होंगी. डीप वाटर के लिए लो फ्रीक्वेंसी, शैलो वाटर्स के लिए हाई फ्रीक्वेंसी. लो फ्रीक्वेंसी may be about 40 to 50 kilohertz. High frequency may be 200 kilohertz. So three properties we have seen: pulse length, which decides the minimum depth. The values are 0.02 to 2 milliseconds. We have PRF, number of pulses per second, which also affects the performance. This decides maximum depth measurable. This should be less for deep water, more for shallow water. Then we also talked about frequency. Here all. Another property that affects, or characteristic that affects the performance of the echo sounder is something called beam width. Now what is this beam width? अभी हमने दिखाया कि pulses are transmitted like this, it goes and comes back. But actually no sound can be transmitted as a pencil beam. So actually एक beam transmit होती है. ये सिग्नल
हिट करता है और रिफ्लेक्टेड एनर्जी वापस ऐसे जाती है. So this was the signal going down and this is the signal coming up. The angle here is called the beam width. How does it affect the performance? अगर बीम विड्थ ज्यादा करेंगे तो सेम एनर्जी विल बी स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया. The strength of the signal coming back will be less क्योंकि ये सारे एरिया में फैला हुआ है तो पर यूनिट एरिया जो पावर जा रही है वो कम हो जाती है. तो बहुत ज्यादा बीम नहीं रखना चाहिए. अगर हमने इसको बहुत ज्यादा नैरो कर दिया, इतना ही रखा, तो जो सिग्नल आ रही है वो हो सकता है मिस कर जाए, हम रिसीव ना हो. So what we do? We keep a moderate value of the beam width, which is normally 15 to 25 degrees. This is the conical angle basically of the radiation from the transducer. So these are the characteristics of the echo sounder which affect the performance. There can be other external factors which will affect the performance of the echo sounder. Which is external to the echo sounder. ये सारी चीजें echo sounder की अपनी थी. Other factors are not of the echo sounder but of the other things like seabed. Hard surface, better reflection. Yes, go ahead. सर इसमें एम्पलीट्यूड का कुछ होगा इफेक्ट? Amplitude is basically power. जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर. When I am speaking, there is an amplitude of vibration. जो particles जो है यहाँ पे air पे they are vibrating like this. That's the amplitude, right? यस सर. The amplitude is now more. Now the amplitude is going to be more. Are you listening to me? Yes, sir. That amplitude was more. That is why you hear loud. When I say, are you listening to me? Yes. Are you listening? Amplitude is small. So basically amplitude is related to the power transmitted. किसी को दूर में आवाज देनी है तो धीरे बोलोगे, तेज बोलोगे? तेज बोलेंगे. What are you doing? तेज मतलब क्या? टेक्निकल टर्म में बात करें तो एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया उसका, ज्यादा है. ज्यादा पावर दिया, ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा. तो सर उससे एको साउंडर की एक्यूरेसी पे कुछ इफेक्ट होगा या नहीं होगा? एक्यूरेसी से कुछ लेना देना नहीं. मैंने कहा कि आर यू लिसनिंग टू मी और मैंने कहा आर यू लिसनिंग टू मी, दोनों में कुछ फर्क आपको समझ में आया कि सुनाई सब तेज है या कम पड़ा? मेरा क्वेश्चन तो नहीं बदल गया? ओके सर. आप डीजे पे गाना सुनो या हेडफोन में गाना सुनो, गाना तो वही बजता है ना. So amplitude is all about Yes, sir. loudness. How much distance it can travel. More the amplitude, more distance. More energy into it, more distance it can travel. Are we good? सर ऐसा नहीं होगा अगर एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाए तो शायद वहाँ पहुँचे ही नहीं, डिस्टेंस कम हो, मतलब उतना डिस्टेंस ना कवर करे? ऐसा होता है ना. यहाँ से जो हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं उसकी एम्पलीट्यूड कुछ होगी. हमने इतना एम्पलीट्यूड दिया, जब टकरा के वापस आता है तो थोड़ी सी मिलती है. इसका एम्पलीट्यूड जितना ट्रांसमिट किया था हमने, जब रिसीव होता है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है.
फिर इसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर में डालते हैं, तो फिर से इसको बड़ा करते हैं, इस सिग्नल को फिर से बड़ा करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। सर अगर ट्रांसमिट ही बहुत कम एम्पलीट्यूड पे किया तो सर कुछ उस पे होगा कि मतलब उतनी डिस्टेंस ट्रेवल ही ना कर पाए? नहीं सुनाई दे रहा है। तो जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो यही होगा ना, जब मैं बोल रहा हूँ और एम्पलीट्यूड कम रखिए तो सुनाई नहीं पड़ेगा, वहां तक पहुंच नहीं रही। आपको सुनाना है तो गिवन अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड चाहिए ना मुझको। ओके सर, तो मतलब उसकी कुछ फिक्स वैल्यू होगी ना कि इतना इतना एम्पलीट्यूड होना ही चाहिए तभी पहुंच पाएगा। इतना होता है कि पल्स जाए और टकरा के वापस आ जाए, इतना ओके सर, होता है, अंडरस्टूड। ओके इतना सर, होता है कि वो जितना काम है, मैं जितना बोल रहा हूँ उतने से तो काम हो रहा है ना। तो मैं आपसे आ गया समझ में सर एम्पलीट्यूड का। मैं उतना तो ट्रांसमिट करूंगा कि माइक्रोफोन तक पहुंच जाए। दैट्स माय जॉब, दैट्स द गोल दैट आई हैव, कि मेरी आवाज माइक्रोफोन तक पहुंचे और वो कन्वर्ट करके सिग्नल आप तक पहुंचाए। अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। तो देयर इज एनफ पावर कि वो डीप वाटर भी जाए या शैलो वाटर भी जाए, तो अलग अलग पावर की रिक्वायरमेंट भी होती है। दैट इज ऑल डन। सो अदर फैक्टर्स इज सीबेड, हार्डर द सीबेड सरफेस, बेटर इज द रिफ्लेक्शन। रॉकी होगा तो बढ़िया सिग्नल आएगा, मडी होएगा तो नहीं आएगा, सैंड होएगा तो थोड़ा और कम आएगा। So different type of seabed. Then propagation of wave. Already we have seen that it is 1500 meter per second, but different salinity, different temperatures, this will change. That will affect the performance. सही गलत बताएगा थोड़ा। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो दूसरा हो जाएगा, अगर डेंसिटी कम होगी तो अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में तो हमने ये लिया है 1500। अगर वो मैच नहीं करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर फ्यू एक्सटर्नल फैक्टर्स। डेंसिटी लेयर्स वगैरह भी हो सकते हैं। वेरी बेसिक मोस्ट सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ इको साउंडर क्या होता है उसमें? हमारे शिप में, ब्रिज में एक इको साउंडर होगा यहाँ पे, और यहां से कनेक्टेड एक ट्रांसड्यूसर होगा। सो ऑल इज अबाउट दिस, हाउ टू रिप्रेजेंट द होल सिचुएशन इन अ ब्लॉक डायग्राम। So first one, in the bridge we have a recorder प्लस उसमें प्रोसेसर भी होता है कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, जो सारा सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह, तो ये ब्रिज में होती है। इसी ब्रिज में डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन, द रिकॉर्डर और प्रोसेसर gives a signal to something called oscillator. Oscillator's job is to produce electrical signal of the given frequency of given pulse length repeated after PRF. So PL or PRF is coming from here but decided here. Processor decide करता है कि कितने pulse length का और कितने PRF का pulse create होगा। So processor is giving signal to this, which is generating electrical signal. This electrical signal is given to the transducer. ये अंडर वाटर है, यहाँ ट्रांसड्यूसर है। ये दोनों चीजें यहाँ पे थी, ये ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का दो पार्ट,
transmission and reception. The signal is transmitted like this, hits the seabed, and reflected energy is received by the receiver. ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव्स में बदल दिया. ये साउंड वेव ट्रैवल करके सीबेड तक गया, रिफ्लेक्ट होके वापस आया, रिसीवर ने रिसीव किया, रिसीविंग ट्रांसड्यूसर ने, एंड इट कन्वर्टेड द सिग्नल बैक इनटू द सेम थिंग. उसी पीआरएफ उसी पीएल का सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा. बट सिग्नल इज वेरी वीक. यहाँ पे बहुत पावर था, जब रिटर्न होके आई तो पावर बहुत कम हो गई. So for this, what is done? It is given to receiver or amplifier. The signal, small signal, is enlarged. Amplifier में एक कंट्रोल भी होता है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना बढ़ाना है सिग्नल को. What we call the gain control. We can increase the gain, the signal will become bigger. We can reduce the gain, the signal will become little less. This signal, when received, is given to the recorder, and the recorder then finally produces a recording like this of the depth. So this is the block diagram. Recorder, oscillator, amplifier, etc. all in the bridge. Only transducer part underwater at the keel. Are we good? Yes, sir. Any questions so far? No, sir. Ritesh, any question? No, sir. Okay, then take a break. We come back. We continue with this. आज 2 क्लास लगातार है, so we meet after this. Bye bye. Signing off. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.